Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Land and the People. And before starting the chapter, we have to know some important terms like mixed farming, a type of farming which involves the growing of crops and rearing animals on the same farm. Next is ranch, a large farm for breeding and raising animals. Next is oasis. Oasis means a fertile area in a desert, usually formed a depression where groundwater is available. Next is wadi. Wadi means a flat-floored water channel through which water flows when it rains. Next is basin irrigation, a system of farming in which agricultural fields are divided into large basins by building earthen banks to hold back silt brought by floodwaters. Next is intensive farming, means a system of farming in which lot of capital and labor is used. Next is leaching. Leaching, a process in which water seeping through the ground washes away soil nutrients, making the soil infertile. Next is shifting cultivation, a type of agriculture in which a plot is cleared and cultivated as long as its fertility lasts and is then abandoned for a new plot. Next is distributary. Distributary, a branch of a river that flows away from the mainstream. Mangroves. Mangroves, a vegetation usually having supporting roots that grows in tidal creeks and salt marshes. Now let's start the chapter. We know that man and environment are mutually interacting, and the physical or natural environment largely determines the pattern of human lives and its activities. Yet there are differences in cultural and economic activities of man within similar environment in different reasons. For example, camel herding is important economic activity in the Sahara Desert, which is not found in the Western Australia Desert, which has a similar physical environment. Similarly, economic and cultural life of the Ganga-Brahmaputra basin is very different from that of Amazon basin, and prairies of North America and the velds of Africa also differ from each other in their economic and cultural development. जैसे कि लैंडफॉर्म एक जैसी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम डेजर्ट की बात करें, अगर सहारा डेजर्ट में अगर कैमल हर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है क्या उसके भी लोग कैमल हर्डिंग करते होंगे? नो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एक्टिविटीज़. ओके, एंड ऐसे ही जो हमारी प्रेरीज हैं एंड वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका है, क्या उनमें लोगों की लाइफ सेम है? नो. सेम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो लोग रहते हैं, अमेज़न बेसिन में जो लोग रहते हैं, क्या उनका जो लाइफ कल्चर है, क्या उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो सेम है? नो, दैट आर टोटली डिफरेंट. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन द डेजर्ट्स. Firstly, we are discussing about the life of people in deserts. The deserts are characterized by extreme aridity and sparse vegetation, जहाँ पर बहुत सूखा होता है, ओके, और vegetation जो है वो बहुत कम होती है. डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट और कोल्ड, डिपेंड ऑन द लैटिट्यूडनल लोकेशंस, एंड दे हैव अ हार्श इन्वायरमेंट जहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, लोगों के लाइवलीहुड के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं. नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज लोकेशन एंड रिलीफ. The hot deserts lie between 20° and 30° latitude, north and south of the equator, and these are found in all the continents except यूरोप एंड अंटार्कटिका. जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, इक्वेटर से 20° एंड 30° लैटिट्यूड्स पर हमारे क्या होते हैं? हॉट डेजर्ट्स होते हैं. अगर हम बात करें यूरोप और अंटार्कटिका की, इनको छोड़कर बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं. दीज आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. मेनली ये वेस्ट साइड में होते हैं कॉन्टिनेंट के.
The main hot desert in the world are the Sahara, Kalahari, Arabian, the Great Australian, Atacama and the Thar and the Mexican desert, जिसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा इन द वर्ल्ड. ओके